Yes. It's good. It is recording. Great. So, great. Hope everyone has joined. Nine has joined. Nice. One. No lesson. Fine. Great. So, guys, last till the point we did cover most of like the fundamental Apex collections and all those things, right? And for all those collections, how we want to cover the loop, we covered the for loop, the for each loop for this part. Before we proceed any further, anyone else has any questions, any query? And did you guys get a chance to try the while and do while loop which I had mentioned? Yes, sir. Any issues? Nothing so far, sir. Others? Anyone else? Any issues with this part? No issues? Okay, great. If this part is fine, I think then we are good to proceed next. And the thing which we will be doing today, I can say, is one of the most important things that you will end up repeatedly doing in Apex. Right? In Apex, there are two things you will have to do. The purpose of Apex code is to work with data, to modify records based on some custom logic, some modification, some criteria. Then, obviously, if you have to update records, अगर आपको data update करना ही है, then you need two things. One, retrieving data, and two, committing data. डेटाबेस से डेटा लेके आना एंड डेटाबेस में वापस अपडेटेड या मॉडिफाइड डेटा भेज, ये दो चीजें तो आपको सीखनी पड़ेगी. तो देन हाउ डू वी रिट्रीव डेटा इन सेल्स? So today we will be covering that. And for retrieving data, let me just and for retrieving data, what we will be learning today is SOQ, which is structured object query language. Now, all of you must have at some point of the other heard about SQL, which is structured query language, which is what works in database, relational databases जो होते हैं हमारे Oracle के हो गए, MySQL के हो गए, सब relational database में आप query लिख के you pull data. An example of this would be select say, star from some table, and you can query data. उस टेबल में जो डेटा है, जो क्वेरी है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए. Right. Similarly, in Salesforce, what they have built is, in Salesforce, obviously, we don't have tables. Okay, we don't have tables as such. हमारा जो database का schema है, that is what, instead of tables, we have objects. Purpose is basically same, right? Every object is a schema, a structure of data that we have created. सेम एज टेबल्स. टेबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम कॉलम देते हैं एम्प्लॉय आईडी, उसका एक टाइप बताते हैं, अच्छा एम्प्लॉय आईडी नंबर होगा, इसके बाद हम बोलते हैं एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट होगा, राइट, एम्प्लॉय एड्रेस विल बी लॉन्ग टेक्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सैलरी विल बी अ डेसिमल डबल. Same thing we are doing with objects. So it translates into the same thing, which is tables in SQL, object in Salesforce, which is why SOQL is structured object query language. Your querying objects using the
predefined syntax and logic which is available here. Now, what are the key things SQL में आपको जब करनी है? So, the key things would be what to fetch. This is our first thing कि हमको fetch क्या करना है. Second part is from where to fetch. Kunal sir, are you sharing the screen? No, I was writing some notes. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Now it is. Be prompt, guys. Be prompt. Screen नहीं दिख रहा आप लोग बता क्यों नहीं रहे? Fine. Right. So, first question, what to fetch? Second question, from where to fetch? Third question you have to answer always is, are there any conditions? And do we want some kind of arrangement? These four questions, always you think it will let you create any kind of query you want, any kind of SQL you want to create. Okay, now let me give you an example. So hold on. Right. So must be still visible, right? The plan is spin. Yes. So let's go to account. Now, this is the data that we want to query. This is the data that we have to query. Right. अब ये हमको जब query करना है, so then from where do we have to fetch? We have to fetch from a specific object. What is the object in this case? Account. Right. Now, what to fetch? Let's say I want to fetch name, right? Name, type, website and industry. ये चार चीजें मुझे fetch करनी है. Name, type, website and industry. So in this case, what to fetch becomes what is the specific data within this object I want to pull. अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? As I have told you, whenever you are working with backend, the label does not matter. What you will need is the API name. So you need name, type. What is the other field I said? Name, type, industry and website. Right. Industry and website. ये हमको चार चीजें हमको चाहिए. So right now what we have done is just these two we have decided what to fetch and from where to fetch. Now whenever you want to test a query, जब भी आप query लिख रहे हो within developer console, there is one tool which is extremely helpful, which is this query editor at the bottom. If you see here, ये जो query editor है, this is something जहाँ पे आप queries लिख लिख के टेस्ट करके देख सकते हो, is your query correct, is it returning data, वो काम कर रहा है कि नहीं, everything can check. So in this case, this part we have confirmed. So then what do we need? We have to fetch these four columns. So our syntax will be always it will start with select. Select के बाद आप लिखेंगे
what you are trying to say, which is name, type, industry, let's see, from where we have to fetch account. Nothing wrong here, no errors are coming here. Just I have written the basic structure कि मेरे को क्या fetch करना है, कहाँ से fetch करना है. Select this from here. Let's execute and see if this query runs. Yes, it ran. और यहाँ पे जितने मेरे पास अकाउंट थे उनका डेटा आ गया. Is this basic SOQL clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. The most basic query you can have, which is from somewhere I have to query something. So कौन सी field, कौन से objects. That is all. Most fundamental, most basic query. This was the simplest thing we could do. Now comes the next one. कि हर बार मेरे को ऐसे simple data तो नहीं चाहिए. You will have use cases, you will have scenarios, जिसके basis पे you will end up with condition. Right. Let's say my condition is I want to only work with the energy accounts which have type as energy, or other which are say direct account. So type is customer direct. That is what I want to work with. Now we come up to the third part. Are there any conditions? We have a condition. Let's say that type is equals to what? Customer direct. This is the condition which we have to add. Now, how to add condition in a query? Very simple. Simple up English sentence forming logic from accounts where type is equals to, since this is a string, तो इसलिए मैंने inverted commas डाला है, and customer direct. It got filtered, right? So based on a condition, ये filter होगा. Where clause का use case समझ आया सबको? Why to use where? Yes. Now, अब तक हमने जितने automations किए हैं, जितने logic build किए हैं, what is the one thing we have understood about conditions? Are conditions always this simple? In most cases जो हमने बनाए हैं लॉजिक्स, उन सब में क्या खाली ऐसे सिंपल एक एक कंडीशन के लॉजिक्स थे? No, sir. Right? So what are the scenarios which can happen with conditions? Can there be multiple conditions? Yes. Okay. Within those conditions क्या हमारे पास अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं? Yes. Okay. Other than Udit, anyone else? Can you give me an example? Of multiple conditions. Anyone? सर ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ रहे हैं आप या कैसे? नहीं, क्वेश्चन अभी समझ में जैसे नहीं. मैंने एक कंडीशन का एग्जांपल दिया, राइट, कि टाइप इज इक्वल टू कस्टमर डायरेक्ट, right? But conditions are not always this simple. So can you give me an example of a complex condition? Just ये account को लेके आप example दे सकते हैं? Limit. Sorry.
Is that limit is correct? No, I'm asking for a combination of conditions. कोई दो आप कंडीशन बना के नहीं बोल सकते यहाँ से. What are the kind of operations we can have? दो conditions के बीच में. We have done scenarios, right, where there are multiple conditions. In some cases, all conditions have to be true. Some have to be true, right? Two or three have to be true, and one can be, or something else can be true, right? So, and or ये सब logical operations conditions में हमने किए हैं कि नहीं किए हैं? Yes, sir. So that same thing तो हमारा database से query करते वक्त applicable हो सकता है, right? So it cannot be always this kind of simple condition. It can be a tougher condition also. It can be multiple conditions, which is why where के अंदर we do have some other of keywords. These the ones I have written in capital. These are keywords. Okay, ये object का नाम है, ये field का नाम है, ये string है. The only reason I have kept this is capital, which means this is a keyword which is applicable for SQL. SQL लिखते तो कुछ keywords आपके होते हैं जिसके बेसिस पर query का structure बना रहे हैं. Similarly, for conditions also we have keywords जिनको हम यूज करके मल्टीपल कंडीशंस ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे कि इंडस्ट्री इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, और इंडस्ट्री इक्वल्स टू कंज्यूमर, राइट. सिमिलरली सर इंडस्ट्री इक्वल्स टू एनर्जी. अगर मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो कितने अकाउंट्स आएंगे यहाँ से? मल्टीपल आएंगे. कितने? मल्टीपल मीन्स हाउ मेनी? सी द डेटा एंड से. 3. एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंसल्टिंग. देयर आर 3 जिनका हमारे पास है एनर्जी इंडस्ट्री, तो ये 3 हमारे पास आएंगे, राइट. प्लस आई हैव एडेड द कंडीशन एंड name equals to not name, rather तीनों का नेम सेम है, कोई और लेते हैं restriction. What is the case? Okay, let me modify the condition to this way. Type equals to customer direct and industry equals to apparel. कितने आएंगे इसमें? Yes, sir. Sorry, One record. वन अपैरल का एक ही आएगा. well, Industry. because there is only one record, it will run only that, right? So you can have conditions like this. यहाँ पे आप multiple conditions को join करके you can make a complex. Now, in all of these conditions, हमने क्या किया? जैसे and or जब these are very basic conditions where I have just written x equals to y. तो आप ये दिखाओ, right? This is what I have written. But what if sometimes I don't have all the data? Right? I don't have all the data. Maybe what I don't know is कि आपका
जैसे कस्टमर डायरेक्ट है, right? What if I have only half value or maybe some part of this thing, right? So I cannot use equals to for that. Equals to means exact match. That is funny. We have another operation which is, let's say, type like. Okay, let's say I write percentage direct percent. Let's run this query and see what happens. तो बेयर नहीं लगाया आपने। Oh, क्या हुआ यहाँ पे? सारे कस्टमर डायरेक्ट वाले यहाँ पे आ गए, right? We got here 7 customer directs, and in total also there are only 7 customer directs, which means लाइक ऑपरेटर ने कैसे काम किया कि टाइप का वैल्यू कंटेन्स परसेंटेज डायरेक्ट समवेयर बिफोर परसेंटेज एंड एंड इन परसेंटेज का मतलब क्या है कि इस टाइप फील्ड की वैल्यू में कहीं पे भी अगर डायरेक्ट हो तो आप उसको दिखा दो. व्हाट इफ आई मेड इट लाइक दिस, नो रिकॉर्ड स्टेट. जैसे ही मैंने स्टार्टिंग का परसेंटेज हटा दी, दैट मीन्स टाइप इज लाइक दिस का मतलब है इट इज समथिंग लाइक डायरेक्ट एंड देन समवन. ओके, ये स्टार्ट डायरेक्ट से होना चाहिए तो ही वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से परसेंटेज हटा दी. व्हाट इफ आई ऐड बैक द परसेंटेज इन द बिगिनिंग एंड रिमूव फ्रॉम एंड, तो मेरे पास सारे वापस आ गए. बाय बिकॉज ऑल ऑफ दिस एंड विथ डायरेक्ट, राइट? सो इन केस ऑफ पार्शियल मैच कि आपके पास पूरा नहीं पता है, तो फॉर दिस इन द फ्लो एंड प्रोसेस फिल्टर हमने कंटेन्स का चेक लगाया था, राइट? नेम कंटेन्स समथिंग, right? So this like operator is same as that. कि type field contains direct if you add percentage on both sides. जिस side आप percentage नहीं लगाते हो, that means it is ending with that. अगर शुरू में percentage नहीं लगाया तो it means it is starting with direct. Is this clear? Like operator. Anyone has any queries, any questions with what like is? सर ये परसेंटेज लगाने के बारे में थोड़ा सा डाउट है. Percentage, okay. Percentage का मतलब क्या है? Okay, let's take fine. Let's work with your name. Okay. Now, if I write here, select name from employee, where name like W percentage. What does that mean? जो भी नेम्स डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं वो Exactly. दिखेंगे. If I write here, think of it this way. If I write here W and then percentage, what will come? जो भी name, percentage का मतलब है any string. ठीक है? So this means कि name should be like W and then any string. So in that case, your name will come. सर Yes. Now, however, अगर मैंने यही लिख दिया होता परसेंटेज डब्ल्यू, तो उसमें क्या होता? और लास्ट में जो वर्ड डब्ल्यू होगा वो आएगा। एग्जैक्टली मतलब
स्टार्टिंग में कुछ भी हो, परसेंटेज मीन्स कुछ भी हो, लास्ट कैरेक्टर डब्ल्यू होना चाहिए। ओके, तो इसमें वसीम विल योर नेम कम? Oh, sorry. No, right? Now, if I make this, however, percentage W and then again percentage, this means कहीं पे भी W हो, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, as long as W है। Okay? हाँ वो सारे आ Now जाएंगे। let's try the same thing with this. When I write direct and percentage, okay, let's see what are all the accounts मेरे पास। यहाँ पे okay, let me actually do this. Fine, that will be better. Let's try industry like E percentage। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या आएगा? कौन कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉनिक, एजुकेशन, एनर्जी। Right, let's check. E percentage means electronics, energy, education. Why? As long as it starts with E, बाद में कुछ भी हो, does not matter. Okay. Now, however, let me change it to percentage. Exhibit. कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया? हमारे पास कुछ है नहीं जो ई से एंड होता हो। Right? Now, if I write percentage E percentage, क्या हुआ यहाँ पे? What changed here? और वो ई जहाँ पे आएगा पूरी स्ट्रीम में, जैसे कोई स्ट्रीम में फिर करेगा उसके साथ वही आउटपुट देगा, इसलिए Exactly. भी ई होगा। तो Right. Previously, we were only getting electronics, energy, education क्योंकि खाली starting में ही है. But because now I have made it percentage E percentage, which means apparel के बीच में भी एक E आता है, तो वो ऐड हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में बीच में भी एक है, वो ऐड हो गया। जो ई से स्टार्ट हो रहे थे वो भी डिस्प्ले हो गए। अगर कोई ई से एंड भी हो रहा होता वो भी डिस्प्ले हो जाए। राइट, नाउ इज दिस परसेंटेज क्लियर? यस सर। And again, the same thing I can use with another condition. And let's say type is equals to customer channel. तो क्या होगा? खाली एक ही है जो सेटिस्फाई हो रहा है, लॉ टेक्नोलॉजी कस्टमर चैनल आ गया। राइट, so these are your and और नॉट लॉजिकल हमारे ऑपरेटर हैं, एंड कंपैरिजन के ऑपरेटर हमारे कंडीशन वाले। नाउ ये तो चलो हमने कर दिया फॉर इंडस्ट्री लाइक दिस इन दिस। हाउएवर, व्हाट इफ आई वांट, लेट्स से मुझे करना है क्वेरी कि फॉर एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, ये तीनों अलग से मुझे चाहिए, तो मैं टाइप चेक करूँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों मैं चेक करूँ। इफ इंडस्ट्री इज आइदर ऑफ दीज थ्री तो डिस्प्ले करूँ।
Now there are two ways of doing this. Okay, one is I write the most basic version where industry is equals to electronics or industry is equals to apparel or industry is equals to construction. Now, don't get me wrong. This will also work. This is also a valid query. मैं अगर ये चलाता हूँ, what did I mean? Oh, I did double. आया मेरे पास तीनों आया. क्वेरी गलत नहीं है, right? So this is already there. However, ये तो मेरे पास तीन थे इसलिए. अगर ये मेरे पास 50 होते तो मैं क्या लिखूं, right? ये अगर मेरे पास 50 होते तो मैं क्या लिखूं, ऐसे करके 50 बार और लिख के वो लिखता. लिस्ट That is why Salesforce has already let us know कि देखो आप लिस्ट बना सकते हो. Okay, you can have a list in Salesforce. New list of string. हम लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं? तो हाँ सर. आप क्वेरी में भी लिस्ट यूज करो. So for that, Salesforce has provided us two operators. One is in and दूसरा है not in. So if I write here industry in, क्या क्या था? Apparel, energy, construction. Industry in apparel, energy, construction. तो आ गया तभी तीनों इंडस्ट्री, right? And if I write here not in, तो उल्टा हो जाएगा. उन तीनों को छोड़ के बाकी आ गए. So it lets us also use in and not in to use with collections. And remember, this in and not in will be very useful because मैंने आपको क्या बोला था, our code should always be customized, right? Sorry, not customized, optimized. तो अगर आप एक चीज एक बार में कर सकते हैं तो आप उसको 10 बार नहीं क्वेरी करेंगे. You will work with list. हम लोग collections यूज करेंगे जहां हो सके. That is why for queries, in is something which is used a lot. And these are all the examples of comparison of it. Like equals to, not equals to, less than, greater than, for number, less than, greater than, in, not in, right? This happens. These are all the values which are available to us. Now, ये तो हमने देखो बेसिक किया, right? But यहाँ पे तो हम क्वेरी टेस्ट कर रहे थे कि चलो ये क्वेरी चला के देखते हैं, ये क्वेरी चलता है, हाँ ये क्वेरी चलता है, डेटा हमारे पास आया, डेटा इज राइट. तो दिस इज अ वर्किंग क्वेरी. बट यहाँ पे क्वेरी लिखने से तो मेरा काम होगा नहीं, क्वेरी तो मुझे लिखनी है एपेक्स में, राइट? So then once you have checked your query is correct, right? अब ये क्वेरी मेरा एक्चुअली रिटर्न क्या कर रही है? हमने जो रिटर्न टाइप देखे हैं, राइट? डेटा का रिटर्न टाइप देखा है. डेटा के क्या क्या रिटर्न टाइप हो सकते हैं?
integer, number, boolean, void, object. तो क्या क्वेरी क्या रिटर्न कर रहा है? What is the query return? What is this query return? So string. No. How can it be a string? अच्छा नेम भी है, टाइप भी है, इंडस्ट्री भी है, तो एक स्ट्रिंग कहाँ से रिटर्न? What is it return? List. Yes, it is returning a list. A list of what? Object. Yes, object. A subject. Yes, sir. हमने तो स्पेसिफिकली लिख दिया कि अकाउंट रिटर्न करो, तो वो Account. अकाउंट हाँ. क्यों नहीं रिटर्न करेगा? ए सब्जेक्ट को रिटर्न I thought right? like generally, sir, I So thought आप पूछ no, रहे no, थे. that's why I want to know specific ये query क्या रिटर्न कर रहे हैं? For any query you are running, आप जो ऑब्जेक्ट क्वेरी कर रहे हैं, it is returning a list of that specific object only. Now this is where best practices come into picture, which is आपको पता है ये अकाउंट के रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं, देन व्हाट इज द वन फील्ड यू शुड ऑलवेज क्वेरी, ताकि बाद में आप इस पे काम कर सकें. कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैसे बताएंगे सेल्सफोर्स को कौन सा रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है? Complete. नो, बट हाउ डज सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड? कैसे पता चलेगा उसको कौन सा रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है? सॉरी, योर वॉइस गॉट कट. Sir, I'm saying maybe some issue with the voice, I guess. Yeah, I can't hear you. Your voice is getting cut off a lot. Yeah, so the one field which we will always need is this field, right? ये लगेगा कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए? क्या है ये फील्ड? कौन सी फील्ड में था ये डेटा? ID. ID. Always add ID in your SQL. Always add ID in your SQL. Now, अब ये हमारी चलो क्वेरी तो कंप्लीट हो गई. So what is this query returning? It is returning a list of account. So I'll create a variable of account type, right? Account list is equals to Apex में कोड लिखते वक्त you have to put the query inside square bracket and done. तो अभी हमारे पास ये क्वेरी में देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं. Right? Let's print this for account recording account list. Output. Let's just print the record name. Record industry. राइट, ये हम प्रिंट करके देखते हैं. एक बार इस कोड को हम चला के देखेंगे.
Let's run this method and let's check what gets displayed. If we wrote our code properly, what will happen? पांच थे, पांचों display होगा. So our code was able to successfully query the records. Okay. So our query returns what? It returns a list of the object जो आप query कर रहे हैं. Select what you want to query, from, where you want to query, where, what condition to satisfy. यहाँ तक clear हुआ सबको? Everyone, Yes, I sir. want others also to answer. I have just hear 1-2 guys' voices. Are the other able to understand or are they not able to understand? शुभम, आपको समझ आया? Yes, sir. ओमकार? Yes, sir. तो यहाँ पे हमारा लाइक का यूज केस क्या था? Why do we use like, ओमकार? To select particular condition. लाइक तो कंडीशन के अंदर यूज होता है. हाउ डू यू सिलेक्ट अ कंडीशन यूजिंग इट? Sorry, can you elaborate? How are we selecting conditions using like? Like we used to know percentage, E percentage. So can So what does that do? What does that do? Percentage, percentage. I forget those words. हिंदी में बताइए क्या होगा? पर्टिकुलर वो सॉर्ट करते रहेगा लाइक ऑपरेटर से. सॉर्ट करेगा? सॉर्ट कैसे करेगा? मतलब अरेंज कर देगा? या अरेंज कर देगा. Okay. Mukta, do you agree with this? नहीं सर. अच्छा, तो क्या हेलो. करेगा? या यस, तो क्या करेगा लाइक से? लाइक से हम लोग पैटर्न मैचिंग देखते हैं. मतलब लाइक Okay. ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग एंड वो बिगनिंग एंड पे यूज होता है एंड परसेंटेज साइन यूज करना पड़ता है हमें. देन वेयर क्लॉज में हम लोग लाइक का कंडीशन डालते हैं. देन फॉर एग्जांपल वेयर No, fine. नेम Hold on, लाइक. hold on. Oh, that's fine. That's fine. Okay. श्रुति, मल्टीपल कंडीशंस अगर ट्रू होनी चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? श्रुति, मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? सर एंड यूज करते हैं.
That's Shruti, right? Okay. प्रियंका, नॉट इन का यूज क्या होगा? प्रियंका, नॉट इन कैसे यूज होगा? शुभम कुमार, why have we added ID in the query? Yes, sir. क्वेरी में आईडी क्यों ऐड किया मैंने? To fetch the data from the Salesforce. वो तो सारी फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, आईडी स्पेसिफिकली क्यों ऐड किया मैंने? To display the data for a particular account object. ये मैंने आईडी हटाया, एग्जीक्यूट, डेटा डिस्प्ले हो कि नहीं हुआ? Yes, sir. राइट, मैंने आईडी हटा के अगर मैं रन कर रहा हूँ तो भी डेटा डिस्प्ले होता है कि नहीं? ये तो चलो पुराना वाला है, बट स्टिल इसमें भी तो बिना आईडी के चल रहा है, राइट? Right. तो देन आईडी का डेटा डिस्प्ले के साथ चलिए। Sir, ID is primary होल्ड key. ऑन शुभम, आई हैव नॉट आस्क्ड। शुभम कुमार, Yes, sir. सो डिस्प्ले के लिए तो आईडी की जरूरत नहीं है, तो आईडी क्यों ऐड करते हैं? Uh, okay, select. ओमकार, आई सॉ यू रेज योर हैंड, आईडी क्यों ऐड करते हैं? सर उस रिकॉर्ड पे कुछ डीएमएल कर सके तो इन फ्यूचर, सो नीड टू टेक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। एग्जैक्ट, तो वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके सेल्सफोर्स, इसलिए हमको आईडी देना पड़ेगा। अब आईडी अगर बाद में देना है तो उसके लिए पहले आईडी फेच करना पड़ेगा, तभी हम दे सकते यस सर। हैं। नाउ ऑनेस्टली यू गाइस टेल मी, ये सब तो मैंने अभी लास्ट 40 मिनट्स में बोला, लास्ट 40 मिनट्स हर एक चीज 4-4 बार करके बोली। हाउ लाइक ऑपरेटर रन्स, specifically he asked me that okay, why you are using percentage. I explained with his details, with someone in the batch, his name, example, everything detailed, and 15 minutes later I asked someone else why like operator is used and you can't answer. What is the issue, guys? Is there an issue happening? Are you not able to understand? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? People here who जो non technical backgrounds हैं, who is here from now? I think Wasim, you are from a non technical background, right? Yes, correct. क्या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, समझने में तो दिक्कत नहीं हो रही मुझे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू that is serving as an obstacle? If there is an obstacle, you let me know, I'll take care of it. But what is the obstacle?
ये तो अभी बेसिक एसक्यूएल लिखा था मैंने, अभी तो इसके फोर्थ पार्ट पे मैं गया ही नहीं। अभी तक तो बेसिक एसक्यूएल के भी पूरा खत्म नहीं किया मैंने। उसके अंदर ही आपको इमीडिएटली पढ़ाने के बाद अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे, हाफ द पीपल हियर कुडंट आंसर, टू पीपल डिड नॉट इवन कम ऑफ म्यूट। जस्ट मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले 9 जन थे, एक तो कोई चला ही गया। Someone immediately dropped the moment I asked someone a question. I can't even remember who dropped. 8 हो गए immediately I saw 8 हो गए। This question no one will ask you. No one will actually ask you that क्यों एसक्यूएल में क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, वेयर क्या होता है, लाइक क्या होता है, इन क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, लिस्ट क्या होता है। नो वन विल आस्क यू। बट अगर आप यही नहीं आंसर कर पाएंगे, देन द क्वेश्चंस पीपल विल आस्क यू, you should not even be dreaming of clearing it, क्योंकि these are the building blocks। एक्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे दोज विल कम फ्रॉम अ लॉजिक, फ्रॉम अ सिनेरियो। वो आपको तब सोच के आंसर बताना पड़ेगा, लेकिन आप तभी बता पाओगे जब आपको पता है क्वेरीज कैसे काम करती है। यहाँ पे तो आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन में इट वोंट बी लाइक अ टेक्स्ट बुक एग्जाम की तरह तो नहीं होगा कि व्हाट इज एंड ऑपरेटर एंड आप ये डिस्क्रिप्शन बोल दोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं पूछेगा। कोई बोलेगा मेरे पास ये 15 अकाउंट है, इसमें से 4 में ये है, 3 में से ये है, 7 में ये है, मेरे को ये 5 लाने हैं, कैसे लाऊंगा मैं? तो तब आपको क्वेरी बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कैसे बनाना है, अगर आप आंसर ही नहीं कर पाओ, अगर आप फोकस ही ना करो, एंड आई हैव सीन दिस हैपन इन पास्ट बैचेस। जब तक मॉक इंटरव्यू का डेट नहीं देते तब तक पीपल डोंट फोकस। आई एम सॉरी टू से बट एट द एंड वो फिर कुछ गैदर नहीं कर पाते। The people who continuously keep up to speed, continuously keep asking questions, doubts लेके आते हैं, क्वेरी लेके आते हैं, खुद से अलग से पढ़ते हैं, वही मैंने देखा है बाद में भी परफॉर्म करते हैं। वो कंटिन्यूअस एफर्ट का रिजल्ट उन्हीं को मिलता है। आपको अगर लगता है क्लास अभी चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग होता रहेगा, मैं हो जाएगा, उसके बाद एंड में रिकॉर्डिंग देख के सब सीख जाऊंगा, देन यू आर रॉन्ग। एंड दिस इज नॉट बिकॉज Salesforce is tough. Salesforce is a technology where every day non-technical people are switching to Salesforce. Okay, so Salesforce is not tough. Salesforce is one of the easiest languages to get into. The only thing is जहाँ पे fundamental parts आपको सिखाए जा रहे हैं, वो आप ध्यान से सीखें, and it will be completely clear. ये अभी why I'll give you an example. You guys can see my screen, right? ठीक है, बोल रहा हूँ कहाँ से दिखे? राइट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस यस सर। राइट, बेसिक एक क्वेरी में आप लोग अगर ये नहीं बता पाए, ये क्वेरी आप ऑन द फ्लाई लिख पाएंगे कोड में? इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके साथ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप फील्ड्स, उसके अंदर लुकअप रिलेशनशिप्स, उसके अंदर उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट, फ्रॉम केस, विथ आईडी, विथ वेरिएबल्स, आप लिख पाओगे अगर आप यहाँ पे इस क्वेरी में अटक गए तो?
I'll share this documentation. Whatever I have told today, the basic of the SOQL. Select where from, right? Comparison, logical operators. I want all of you guys to study this. Tomorrow I'll just move to the next part of the SOQL. कोई question लाएगा तो I'll answer questions. If you don't have any question, please let me know in the beginning of the class, and I'll move on to what is this part, the fourth part, the quiz. And then we will move on to how to actually write tough SOQL. आज जो पढ़ा है उसमें से किसी को जो जिसको भी डाउट है, आप डाउट पूछो immediately. I have told you the first 5, 10, 15 minutes, however long it takes. You bring your questions, I'll answer every question. But if you don't bring a question, I'll assume you don't have any question. Anyone has any question right now from what we covered? सर एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? ज्यादा किसमें? कोई डिफरेंस है क्या एसक्यूएल किसमें और difference? एसक्यूएल में? The concept is same, which is why नाम उन्होंने same रख दिए. Okay, that is what I told right initially. The concept is basically same. Okay, we have a database schema जहाँ से हमको in a structured language हमको लाना है data. So that is structured query language. So a query language which lets you pull data from a structured schema. ये होता है SQL, right? So that same thing is happening here, but instead of tables, what we have is objects. So that's why it becomes structured object query language. Now the only difference here is database में हमारे पास जो tables होते हैं और एक views होते हैं, right? These are two different things. Tables is my database का जो structure है, actual जो column row वगैरह है, and view is UI पे हम कैसे दिखाते हैं, which is why in SQL हम लोग we can do something which is called a join, right? मतलब दो टेबल का डेटा एक साथ ज्वाइन करके दिखा सकते हैं, बट इन दिस केस वी कैन डू दैट. देयर इज नथिंग कॉल्ड ज्वाइन इन एसओक्यूएल. इनर क्वेरी होता है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट दूसरा टेबल चाइल्ड टेबल हम ला सकते हैं, बट ज्वाइन वगैरह नहीं कर सकते. ओके, एलियस देके व्यू बना के वो दैट कांट हैपन. सो बट ओवरऑल द कॉन्सेप्ट इज सेम, which is why as you can see Yes, sir. even some of the syntax also they have make sure कि वो similar, right? ये देखो सी वाला एग्जांपल आप देखो. Select ID from contact where last name is Young or account name is Quick. Almost similar to SQL, right? Oh, and one more thing, यहाँ पे SOQL में select star does not work. SQL में select star आपका जितने कॉलम से सारे लेके आ जाते हैं. मतलब अगर मैंने select star from account SQL में मारा होता तो मेरे जितने fields हैं सारी UI पे आ जाती, right? But in Salesforce star does not work. Instead आपको सारी fields लिखनी पड़ेंगी. Select name, comma, account number, comma, तभी सारे fields हैं. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, great, fine. Clear. जो भी मैंने आज पढ़ा है उसमें से प्लीज गो थ्रू कीजिए. ये बेसिक आपका क्वेरी का स्ट्रक्चर यू शुड बी क्लियर विद. वेयर के साथ क्या क्या लगा सकते हैं, कैसे मल्टीपल कंडीशन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल दिस शुड बी क्लियर विद. टुमारो कोई क्वेश्चन आते हैं प्लीज नोट दोस डाउन. टुमारो मॉर्निंग टुमारो इवनिंग आस्क मी द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड, देन वी विल गो टू दिस पार्ट, and then we will move to actual complex queries. How to write that? What are the things you should keep in mind? What are the things you should not do? What are the things you should do? Okay? Not clear? Yes, sir. Okay, great.
Thank you, everyone. Have a good night.